तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी खैरियत हैं, अच्छे होंगे। आई होप एवरीवन, ऑल ऑफ यू, every one of you doing well and good. So today's topic is honeycomb. Yes, a honeycomb, a very small topic but very important. Okay, in most of the interview, you may ask regarding honeycomb. Okay, so it's very common terms for all of us. Okay, so what are the topics that we are going to discuss today? We will see in this videos. Okay, तो क्या क्या हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, और अपना दोस्त के साथ बांटो, प्यार बांटो, मतलब शेयर करो यार। क्या कर रहा है आप लोग, वीडियो शेयर नहीं करते, लाइक्स करते भी नहीं, सब्सक्राइब भी करते नहीं है। तो बिना कोई हम लोग देर करते हुए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का हम लोग का टॉपिक्स है हनीकॉम्ब। ओके, सो the topics are here. I have listed honeycombs का बारे में जो मैंने डिस्कस करना है वो लिखा है इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल सी honeycomb क्या होता है। ओके, व्हाट इज honeycomb, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक, cause or causes. Okay, let us read this one. Yeah, causes of honeycomb. तो हनीकॉम्ब का होने का कारण या वजह क्या है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक्स विल बी बेस्ड ऑन सॉल्यूशन और रेमेडीज। हनीकॉम्ब हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, हम लोग जितना भी अच्छा से करो, कभी ना कभी कहीं पे हम लोगों का हनीकॉम्ब आ ही जाता है। ओके, जैसी भी करो कभी हो जाता है, क्या करें। तो वो सब हम लोगों का पोर सुपरविजन का वजह से होता है, और क्या क्या कारण का वजह से हो सकता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लाइक समटाइम्स इट्स वेरी unavoidable to get honeycomb, okay, to occur honeycomb at our site during constructions. Okay, we cannot sometimes avoid this, avoid this, due to our poor supervisions and then some other reasons which we will be discussing ahead. Okay, so remedies we will also discuss, and then technique of repairing. Okay, repairing technique and process, and which materials will be used, okay, for repairing this honeycomb. Okay, so there are two important materials for repairing these honeycombs, okay, for different methods of honeycomb according to their intensity. Alright, तो आगे देख ले रहना ये दो मेथड क्या है, क्या क्या मटेरियल्स है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, रिपेयरिंग टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। तो पहले तो स्मॉल टॉपिक्स समझो इसको, और आप सोचना मत कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चला जाइए, ऐसा मत करना। देखो, हर कोई टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं हनीकॉम्ब क्या होता है। ओके, हनीकॉम्ब एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, ओनली वन लाइन। ओके, इन वन लाइन यू कैन आंसर द डेफिनेशन ऑफ दिस हनीकॉम्ब। ओके, यू कैन गिव, इफ सपोज समवन आस्क्स इन इंटरव्यू व्हाट इज हनीकॉम्ब। ओके, see, basically honeycomb is nothing. What I will show you here is this in picture. This is known as honeycomb. All right, so you can see here, right? Right, this one. This is the defect. Okay, this is the defect while casting a concrete. Okay, so this is known as honeycomb. Okay, it looks like the honeycomb. That's why it has been named as honeycomb. So honeycomb मतलब क्या है? Honeycomb is nothing but a void. Okay, void it sometimes is known as air pocket. Okay, तो definition क्या है? Honeycomb is a void or honeycomb is an air pocket. Okay, this is the simple line, I mean, for honeycomb definition. Okay,
So समझ में आ गया? I hope you understand. I hope you understood. Sorry. And then slip of tongue, I know I did. Then अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं honeycomb का causes का बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. Okay, if you have understood what is honeycomb, okay, by looking at this picture and then by my definition, simple definition, then let us move ahead to the causes of honeycomb. Okay, that's it. And then first of all, okay, before moving ahead to the causes of honeycomb, what will happen if honeycomb occurs to your structure? Okay, see, occurrence of honeycomb will reduce the strength of your structure. Okay, and then it will allow passes or seepage of water through that structure, and which may consequently corrode your reinforcement. Okay, तो honeycomb होने से क्या हो सकता है हम लोग का स्ट्रक्चर को, उसका स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ कम हो सकता है और पानी जाने का एक जरिया होता है ये honeycomb होने से. ठीक है, तो बाद में क्या होगा, आपका जो सरिया है, जो स्टील है, वो आपका कोरोशन हो जाएगा. Alright. Okay, now let us discuss now causes of honeycomb. Okay, तो honeycomb किस लिए होता है? देखो, honeycomb the first causes can be improper compaction. Okay, number one causes. So it may be improper. It may occur due to improper compaction. Okay, और insufficient compaction. Okay. तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग का जो मेशन होता है, वाइब्रेटर जो वगैरह होता है, वो अच्छा से नहीं मारता है, या कोई कोई क्या करता है, वाइब्रेशन मारता ही नहीं है, सिर्फ रोड से क्या करता है, टेम्पिंग करता है. ओके, sometimes at side the masons and all, they don't use vibrator, and maybe they may use a rod for tamping the concrete. Okay, which is not the correct way. We should always use vibrators. Okay, वाइब्रेटर अगर आप यूज नहीं करेगा, ये जो पिक्चर में देखा है ना, ऐसा करके आपका हालत होगा. ठीक है, और नेक्स्ट ये ऐसे भी हो सकता है. ओके, वी विल सी व्हाट आर दिस थिंग्स. ओके, वी विल डिस्कस दिस वन आल्सो रिगार्डिंग दिस. ओके, द फर्स्ट वन इज दैट वन. द नेक्स्ट वन इज मेबी honeycomb में occur due to less cover to the reinforcement. ओके, कवर अगर सफिशिएंट कवर नहीं दिया तो आपका honeycomb जो है वो दिखाई दे सकता है आपका स्ट्रक्चर. ओके, द थर्ड नंबर इज setting of concrete. Maybe your concrete started setting or already set. Okay, that concrete only you have used for casting a structure. Okay, so in that case also your honeycomb may occur. Okay, तो अगर आपका जो कंक्रीट है वो अगर सेट हो गया, अगर वही आप लोग ढल रहा है, ढलाई कर रहा है, तो क्या होगा, आपका honeycomb होने का चांसेस बहुत होता है. ओके, उसके बाद फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट. अगर आप ज़्यादा दूर से 5 फीट का दूर से, या 1.2 मीटर या 5 मीटर, 1.5 मीटर, ओके, वह उसके ऊपर से आप कंक्रीट फेंकता है. इफ यू थ्रो और allow the concrete to free fall beyond 1.5 meters, okay, in that case also your honeycomb may occurs, because there is a chances of separating your aggregates and cements. All right, and then maybe honeycomb may occurs due to more content of coarse aggregate. ज़्यादा coarse aggregate होने से भी आपका honeycomb हो सकता है. ओके, बड़ा जो पत्थर होता है वो अगर उसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो honeycomb उसका वजह से भी हो सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को देखना. इसके बाद नेक्स्ट कॉजेस होता है एडिशन ऑफ मोर वाटर या लेस वाटर. ज़्यादा पानी डालने से भी आपका honeycomb हो सकता है. ओके, और कम डालने से भी honeycomb हो सकता है. तो ज़्यादा कम भी होना चाहिए नहीं चाहिए, और ज़्यादा हाई भी होना नहीं चाहिए वाटर. ओके, सो it should not be more or it should not be less.
Okay, so your water cement ratio should be optimum. Okay, so that it does not reduces your strength, and then okay, good for workability also. Okay, it should be very optimum. Yeah, it should be optimum, I mean. And maybe here I have shown this picture. Okay, so the causes of honeycomb may occur if your reinforcement is like that. Okay, there's this picture here. Okay, this is still congestion. Okay, see, there is no space to pass your concrete, so the honeycomb may occur due to still congestion also. Okay, so this is a beam slab picture which I have already discussed about this reinforcement arrangements, and then what are the defects, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, mistakes. Okay, all the mistakes that I have discussed for these pictures. Okay, in my previous video. अगर आप लोग देखा नहीं तो मैं आई बटन में दे देगा. Okay, click on the I button, you will be able to see these videos if you have not seen these videos. Okay, so those are the few causes of honeycombs. Now remedies क्या है? What are the remedies? Okay, I will show here the remedies in this picture. Okay, keep in have patience. Okay, don't just skip the video. Maybe if you are feeling boring, okay, but what to do? This is not an entertainment what channel, and also this is engineering, serious branches. Okay, serious profession. So don't worry, you have to bear with me. So remedies क्या होता है, solution क्या है हम लोगों का. ठीक है, बोरिंग होना मत, प्लीज बोरिंग होना मत. ये कोई कॉमेडी शो तो नहीं है हम लोग का प्रोफेशन ऐसे ही है, तो आप लोग जान सकते हैं क्या होता है. तो रेमेडीज क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है आप इसको रिपेयरिंग करना. ठीक है, इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा आपको. वो रिपेयरिंग कैसा करेगा अभी हम लोग उसका भी डिस्कशन करने जा रहा है. ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया, आप जॉइन जो होता है इसका जॉइन हो या मतलब जो हनीकॉम्ब हो रहा है इसको सीलिंग करना पड़ेगा. ठीक है, सीलिंग करना पड़ेगा, और इसको सीलिंग करने के बाद लीक प्रूफ होना पड़ेगा. लीक प्रूफ नहीं होगा तो पानी घुस जाएगा, तो आपका रिवर क्या होगा, कोरोशन हो जाएगा. ओके, सो द रेमेडीज इज इट शुड बी जॉइंट. ओके, दिस pores, okay, all those pores should be joined, completely joined and sealed. Okay, so and it should be leak proof, otherwise the water seepage will occur and then your reinforcement will become corroded. Okay, so this is the solution, but how do you repair this? The next topic is this one. Okay, now let us go to this picture, these two. See, honeycomb can be two types. Okay, honeycomb with no exposed, what we call river. Okay, and honeycomb with exposed river. Okay, तो honeycomb क्या आता है, ये इसमें स्टील एक्सपोज नहीं हो रहा है, इसमें स्टील नहीं देखा है, reinforcement नहीं दिखाई दे रहा है इधर. ठीक है, without exposing the reinforcement. Here reinforce can be seen, that means reinforce has been exposed to environment. So दो तरीका का आपका क्या होता है, honeycomb हो सकता है. These two types of honeycomb can occur at your site during constructions. So there are two different methods for repairing these two types of honeycomb. Okay, the first one is this honeycomb with no exposed river. This first one can be repaired with simple technique, just by cement mortar. Okay, so you just make a cement mortar paste and then seal this one as a plastering. Okay, as we do in plastering ना, जैसा प्लास्टरिंग में करता है, तो प्लास्टरिंग का जैसे इधर में आपको प्लास्टरिंग मार के सील करना है. ओके, जस्ट बाय प्लास्टरिंग यू हैव टू सील दिस वन. ओके, wherever there is no exposed reinforcements. Okay, that time then if there is no reinforcement exposure to the environment, then only you use cement mortar. Okay, but what if your reinforcement is exposed like this? Okay, if your reinforcement is exposed like this, then what are the techniques that you need to follow, or which materials you need to use? Okay, let us see here.
So this is mortar, okay? This is mortar mix, sand and cement. And this is your special chemical, okay? So that is known as PMM, okay? So wherever your bar is exposed, just like in this picture, then you have to use this chemical. You have to use this chemical, PMM chemical, okay, to repair this kind of what we call honeycomb, okay. See, where still can be seen in your honeycomb, then you should use this PMM chemical, okay, which is PMM means polymer modified mortar, okay. PMM, polymer modified mortar, I mean, okay, polymer modified mortar. All right. Sometimes it comes, okay, no problem. तो ये पॉलीमर क्या होता है? एक पॉलीमरिक बेस केमिकल है, ओके. इसमें क्या होता है? सीमेंट और सैंड एक ही बार में मिक्स आता है फ्रॉम द इंडस्ट्री, ओके. ऑलरेडी सीमेंट एंड सैंड will contain in that chemical packet, okay, directly supplied from industries. All right, so that is a special chemical, or you can say polymer sand, okay, polymer mortar, okay, for repairing this kind of honeycomb. All right, so I hope I have left no stone unturned to explain all the topics related to this honeycomb. ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, if you have understood, then please do leave a like, comments, and do subscribe my channel. Okay, so if you haven't understand or what are the topics that you want to know from me, then regarding sites, okay, only the site construction, I mean work, okay. So you can drop down your queries, and if you haven't understand what I said today, you can ask me in the comment box. But don't forget to please leave a like and subscribe my channel. So for today, that's all. आज के लिए इतना ही. Bye bye, tata, Bande Mataram, Bharat Mata ki